Hello and welcome everyone in this quick video of JavaScript. In this video, we are going to cover a very important concept, that is arrow functions in JavaScript. By the end of this tutorial, you will not only understand their syntax but also see how they can tackle challenging interview questions and enhance your coding skills. So as you can see on your screen, I have opened my VS Code editor and a browser side by side where I have written some points here. Let's just quickly go through these points and then we straightly jump into the syntax part. So basically, arrow function is a concise way of writing functions in JavaScript. They were introduced in ES6, ECMAScript 6. They offer you the shorter syntax compared to the traditional function. We will see the example. And there is a different behavior of this keyword in arrow function, which is the very important part also. So let's just straightly jump into the syntax part of the arrow function. How do we write syntax for arrow function? So first, let's see how do we define the standard function. So for defining a standard function or for using a standard function, you first use how you use them. You basically, मैं यहाँ पर एक variable name दे रहा हूँ उसको regular function. I am initializing a function in this variable, and you have to use function keyword. After this, you have to use parameters, and there is a curly braces. And there need to be a return statement always. So this is how you define your regular function. And if we define a equivalent arrow function equivalent to this function, we can define something like this: const arrow function. मैंने अगेन ये वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, कुछ अलग नहीं किया है अभी तक. लेट मी जस्ट करेक्ट द टाइपो. और इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली हाउ डू यू डिफाइन एन एरो फंक्शन. यू हैव द parentheses inside which you have your parameters, followed by the arrow as the name suggests and curly braces. This is it. This is how you define your arrow function. Simply a parenthesis, arrow and then curly braces. So syntax हमने देख लिया है, how do we define. Let's just do one example with this. मैं अपने ब्राउज़र में ये डेवलपर टूल्स को टॉगल कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ और इसको बस एक क्विक रिफ्रेश दिया है जिससे कि हम क्विकली चीज़ें कर पाएँ. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू राइट फंक्शन फॉर एडिंग टू नंबर्स. हाउ यू कैन डू दिस यूजिंग एरो फंक्शन. सिंपल, एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप अपना सिंपली एक पैरेंथेसिस, एरो एंड दिस. नाउ डिफाइन पैरामीटर्स इनसाइड दिस पैरेंथेसिस a and b, and what you need to do, you need to get a plus b. And how we can see the result of this, console.log add 10 and 20. Let's see what we get the result. Do we get the result? Yes, we are getting 30. Now you can see one thing here, that I haven't used the curly braces. I told you to use curly braces, but I am not using curly braces there. Why? So there is a point, and the point suggests that if you have only one, basically if you have a function expression, like for example you have one line function expression, you don't need to include the curly braces, right? So in quick language or in a simpler language, if the function body consists of a single expression, you can simplify it further and you can avoid using the curly braces. In which condition you need to use curly braces? Like in some complex functions where you need to get your complex task done quickly. For example, you need to take an example, const calculate, and in this function I am taking a hypothetical situation. मेरे पास x और y वेरिएबल है, and what I want to do here is कि मेरे को पहले तो इसका सम चाहिए और मैं कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ अभी कि सम लेने के बाद I want what, const फाइनल रिजल्ट जो मुझे रिटर्न कराना है. एंड वन मोर थिंग हियर कि आप जब भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इट इज़ मस्ट टू यूज़ रिटर्न keyword, or your functions should have return statement if you are using curly braces. So मुझे रिटर्न क्या कराना है, मैं चाहता हूँ सम की मल्टीप्लाई करा दो 3 से, या सम में ऐड कर दो 10. Okay, now let's just see the output of this thing. How we can see the output, console.log, and we can see calculate, और यहाँ पे मैं 10 और 20 दे रहा हूँ. एक बार खुद से करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा. 20 and 10 30, so it should print with the 40, right? Let's just तो यहाँ पे 40 आ रहा है. So this is the main differences where you have to use curly braces if your function has more than one expression,
And if your function has simple one expression, you can avoid using curly braces and you can have simpler way of writing function. See कितना clean, neat and clean है और कितना easy to use है, right? There is one more thing which you need to remember. So let me just make it stand out by using some emoji. ये एक हमारा एक पॉइंट था कि फंक्शन बॉडी कंटेन्स दिस, और एक ये भी हमारा एक पॉइंट है दैट यू कैन आल्सो यूज एरो फंक्शन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स टास्क. जस्ट रिमेंबर कंसाइज सिंटैक्स इज योर न्यू बेस्ट फ्रेंड. सो ये तो एक एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली. और इसमें एक पॉइंट भी यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी करा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हेन यू यूज़ कर्ली ब्रेसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ रिटर्न स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली. थोड़ा फंबल हो गया, संभाल लेना, राइट. नाउ देयर इज अ वन मोर कंडीशन वेयर यू कैन यूज सिंटैक्स इन मोर nicer way and more cleaner way, and that is, for example, if you have only one parameter. What do I mean? For example, you want a square of number, right? Let's just do this. If we only have the, मैं इसको एक अलग syntax में highlight कर रहा हूँ, so it will be more easier for you guys to see, to refer the specific part. So if you have only one parameter, what do I mean this? Why by this? सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट स्क्वायर. अब आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है कि मैं एक पैरामीटर में नंबर पास करूँ, मुझे उसका स्क्वायर मिल जाए. तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, मुझे दूसरा पैरामीटर चाहिए ही नहीं. सो व्हाट आई कैन डू देयर, आई कैन अवॉइड यूजिंग पैरेंथेसिस एंड ऑल्सो द कर्ली ब्रेसेस, एंड आई सिंपली यूज इट समथिंग लाइक दिस, एंड दिस विल वर्क. दिस इज़ नॉट एनी मिरेकल, दिस इज़ हाउ एरो फंक्शन वर्क्स. ये ही खूबसूरती है एरो फंक्शन की, स्क्वायर. And if I pass 4, I should be getting the result 16 in my console log, and I am getting 16. So if you have only one parameter, then you can avoid using both. Okay. There is a one more condition for you need to understand and you need to remember that if there is no parameter. अच्छा, if there is no parameter, what will you do? Before introducing by myself, let me tell you. Tell me कि थोड़ा फंबल हो गया, फिर से संभाल लेना. Sorry, this is not how I record videos. These are my initial videos, so I am getting a little fumbled, but I am making sure that I am not lacking in explaining the basic knowledge or required knowledge. Yeah, so get back to the point. Basically, we are saying if there are no parameters, you still need the parentheses, but empty ones. What do I mean by this? For example, आपको एक callback function चाहिए, const greet. और ये आप ज़्यादातर ना इवेंट लिस्टनर में यूज़ करते हैं इस टाइप के फंक्शन, जहाँ पे आपके पास पैरामीटर नहीं होते हैं बट आप उनको कॉल कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक बटन पे कॉल बैक फंक्शन लगाना है, आप उस फंक्शन को तो ऊपर डिफाइन कर देते हैं, लेकिन आप वहाँ पे उस कॉल करने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, राइट. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉन्स्ट ग्रीट है, मुझे सिर्फ ग्रीट करना है, हेलो वर्ल्ड. ओके, विल दिस वर्क? या ऑफ कोर्स इट विल वर्क. console.log, I just want greet, and I am calling the function. I am getting the hello world. So basically what I wanted to say you, simple syntax तो ये होता है हमारा, एक parenthesis followed by arrow and then curly braces. parenthesis में आपके आते हैं पैरामीटर और इसमें आपके आती है return statement. Okay, if you have only one parameter, then you can avoid using the parenthesis. If you don't have any parameter, you still need to use parentheses, but the empty ones, and you can avoid using these curly braces if your function expression is one liner. So this is all about the arrow function, how do you use them in basic sense. Now it's time to take things to the next level, and यहाँ पर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने के लिए. मैंने आपको भी बताया जस्ट कि या तो आप कर्ली ब्रेसेस अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप एक सिंगल लाइन में फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. इनके कुछ रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ पर सिंगल लाइन फंक्शन काम में आ जाता है और कहाँ पर हमको कर्ली ब्रेसेस वाला फंक्शन यूज़ करना होता है. और इफ़ आई नेम दिस, सो दिस इज़ लाइक, इफ़ यू नेम दिस लाइक इन सम jargon, so this is concise body syntax, and this is basically block body syntax. So ये थोड़ा सा इसका जार्गनिश नेम हो गया, बट हम इसकी रियल लाइफ
एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ अलग से। आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्टिंग दिस हेडिंग फॉर सेविंग टाइम। इससे आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा कि ये हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है। सो मास्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कंसाइज वर्सेस ब्लॉक बॉडी सिंटैक्स। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, लेट्स सी द कंसाइज वन फर्स्ट। सो इसका पहला यूज़ केस तो हो सकता है आपका मैप फंक्शंस के साथ। फर्स्ट यूज़ केस कुड बी विद मैप फंक्शंस। मैप फंक्शंस आप ऑलरेडी इसके साथ फैमिलियर होंगे। मैप फंक्शंस जस्ट ट्रांसफॉर्म योर एरे इनटू द न्यूअर वन एंड इट फॉलोज योर इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसा एरे चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई हैव एन एरे कॉन्स्ट एरे, आई एम नेमिंग दिस एरे एंड आई एम डिफाइनिंग 1 2 3 4 and I want to double down each element of this array. So what I can do, const doubled equal to array.map, and what I can do there is very simple, num this num into 2. So this is how I am doing this. I am only single expression in my function, क्योंकि मुझे सिर्फ डबल करना है, मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। सो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। कॉल बैक फंक्शन है, ये हर एक इंडेक्स को इटरेट करेगा, आपके हर एलिमेंट्स को इटरेट करेगा और इसको डबल डाउन कर देगा। लेट्स सी द रिजल्ट इफ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। console.log double, yeah, we are getting the result 2 4 6 8. So this is the first application where you can use. Second one would be again the array methods, the filter one, right? इसके अभी मैं एक कोड एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, const filtered array, and what I'm trying to do is that कि जो हमारे पास एरे है इसके ऊपर हम फिल्टर लगा रहे हैं, एरे डॉट फिल्टर। ये हमने अपने एरे और एरेज के मेथड में सीखा होगा, डेट हाउ डू यू यूज़ अ मेथड ऑन देम, लाइक मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। अगर नहीं सीखा तो प्लीज़ गो एंड स्टडी देम। और इसमें आप क्या करते हैं, नम दिस एंड आई वांट टू फिल्टर आउट दी इवन वंस। सो मैं जिसका मॉड्यूलस 0 होगा डिवाइड बाई 2, अगर वो 0 है देन इट इज़ इवन, राइट। सो console.log and filter array, not length. Let's see, I am getting 2 and 4. So this is how it works, right? ये तो कुछ 1-2 एग्जांपल हो गया। और या फिर शॉर्टर कैलकुलेशन तो आपने देख लिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। सो बेसिकली यहाँ पर ही जनरली यूज़ होता है। और वन मोर यूज़ केस, no, this is not a use case, let's leave this. Okay, now it's time for the block body. So block body एक तो एक कैलकुलेशन, आप अगर आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपली। एक आपका हो सकता है ब्लॉक बॉडी में कंडीशनल लॉजिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ कोड const get status, ये एक फंक्शन, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है फंक्शन कि ये आपको ला कर दे रहा है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 100 है देन ही इज़ एन अचीवर, एंड इफ इट इज़ लेस देन 100 देन ही इज़ अ बिगनर। सो व्हाट आई कैन डू, इफ points is greater than or equal to 100, return. Please don't forget to use the return statement if you are using the if and else or your curly braces one, right? आपको रिटर्न यूज़ करना ही पड़ता है जब भी आप कर्ली ब्रेसेस वाला लाइक ब्लॉक बॉडी यूज़ कर रहे होते हैं। else what, return, again you need to return from your else statement, he is a beginner. Let's see if we get something. I am calling this again console.log get status and see. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बस कि जो कि हमने क्रिएट करी है खुद से कि points is not defined. Basically I have not passed a single parameter. So points, it will take points, and what will happen now that I need to pass points like 102. Now it will work. He is an achiever. क्या इस फंक्शन को अगर आप समझ गए, क्या हम इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं? डू यू रिमेंबर द केस वेयर आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर है, यू कैन अवॉइड यूजिंग द parenthesis if you have only the one parameter. Here we have only the one parameter, that is points. So avoid using parenthesis. You can only go with the curly braces, but there is no another option of using this in one function expression. So this will work again. I am refreshing it again for you. So इस तरीके से आप अपने फंक्शन को बहुत ही सिंपलर वे में लिख सकते हैं। पैरेंथेसिस इंक्लूड करना है वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना है वो भी आपकी मर्ज़ी है, बट फॉर जनरली वी कैन यूज़ और नॉट, इट्स टोटली डेवलपर्स चॉइस।
और एक और इसका एक क्विक एग्जांपल देखना चाहेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज एक्सेसिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज. What is this accessing multiple properties? For example, you have an object. When working with object and needing to access multiple properties, the block body syntax allows you to perform more than one operation. Let's see the code implication. Const person equals to this. This is an object. Okay, I am giving it first name as like John. He is a very famous in coding industry. If you know, you know, John Smith. Okay, get full name. And what I am doing there is I am defining an arrow function. What this function is doing, it is basically returning the full name from this object. So again, because we are using the curly braces, we need to use the return statement. Return. And here I am using template literals. person.first name and person.last name. ये मेरे tab 9 ने कर दिया. But basically what we are doing, person.first name and person.last name, we are accessing it here. And if we need to access this, what we need to do, यहाँ पर आंसर आप देंगे. क्या मैं डायरेक्ट इस फंक्शन कॉल कर सकता हूँ? नहीं. I will get an error. I need to do what? person.get full name and then call the function, because get full name is the property of this and this object. It is not an independent function, and it will return with the full name John Smith. So these were the some examples of using arrow functions. I told you, I explained you कि syntax क्या होता है arrow function का, how it is different from traditional function. Basic है, neat और clean code लिखने में help करता है और बहुत ही quickly work करता है, थोड़ा सा आपका time save करता है. Secondly, we see different ways of writing arrow function in different conditions. Then we see the majorly two differences between the block body syntax and the concise body syntax. तो ये आपका पूरा arrow function का एक overview था. सिर्फ एक टॉपिक इसमें रह जाता है, that is very important from the point of view of your interview also, and which is this keyword in arrow function. Basically this in arrow function, how this works in arrow function. I am assuming that you are familiar with this keyword in JavaScript, but I will give you a quick explanation that what happens when we use this in regular function and what happens when we use this in arrow function. And you need to answer the question which I will ask to yourself. For example, we have a function. I am defining a function using function keyword. जहाँ पे मैंने function यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब मैं regular function use करने वाला हूँ. Regular function, and what I am doing there is basically I am doing nothing. I am just console.log this. अब what do you think? What will be the what will be the result? क्या दिखेगा मुझे ब्राउज़र में? Let's see. I think it will target to the window object. Okay, regular function is already declared in 90 arrow.js 90. Okay, let's just see. Yeah, arrow function has been रेगुलर फंक्शन 1 दे देते हैं. हमने ऊपर कहीं यूज़ कर लिया है रेगुलर फंक्शन. अब देखते हैं क्या होता है. इट इज़ टारगेटिंग टू दी विंडो ऑब्जेक्ट, है ना. ये विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है अगर मैं यहाँ पे दिस यूज़ कर रहा हूँ. दूसरा, अगर मैं इसी की जगह इफ़ आई यूज़ दी एरो फंक्शन, कॉन्स्ट एरो फंक्शन. So basically in regular function, this depends on how function is called. If it is called in global scope, it will direct you to the window object, right? And if the function is called inside another function, this will direct you to the block of this function, right? So basically it depends how you are calling your function in regular function. So let me give you a quick note for this also. In regular function, the value of this depends on how the function is called. It can change dynamically based on the context of the function called, such as whether the function is called as a method of an object or in a global scope. In this example, we have called in a global scope. अगर मैं यहाँ पे this call करता है इस object में, तो ये कुछ और रेफर करता. अब मैं एक बार arrow function का quickly आपको example दिखा रहा हूँ. What will happen if I use the same equivalent arrow function for this? I am doing nothing different. Okay, I am doing just something this. What happened? Arrow function is already defined. I am not doing anything. I am just using one map. किसी भी चीज़ को comment out नहीं करना चाहता. Okay, अब देखिए क्या होगा. मैंने सिर्फ
अपने रेगुलर फंक्शन में भी ग्लोबल में कॉल किया था और मैं इसमें भी ग्लोबल में ही कॉल कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनी ऑब्जेक्ट नेस्टिंग देयर. console.log this. Now see the funny part or the interesting part. It is also targeting me to something window object. Why it is happening? So these both are targeting me to the same thing. Now you will say, sir, दोनों तो same ही behave कर रहे हैं. What is the basic difference? No, the basic difference is that this is inherited from the surrounding context. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी क्या करूँ ना कि अगर मैं इसको अभी किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कर दूँ नेक्स्ट, तो ये डिफरेंटली बिहेव करेगा. फॉर एग्जांपल आई हैव एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट and this, okay, arrow function 1, and what is happening there basically, yes, that's it. No, we can do something like this. I can have name like John. Okay, I'm showing you something that I'm proving the fact that this in the regular function is inherited from its surrounding context. I am proving this fact. And regular फंक्शन को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर फंक्शन 1, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग एरो फंक्शन एज एरो फंक्शन 1, राइट. लेट्स जस्ट कॉल इट एरो एंड व्हाट, बिकॉज इट इज शोइंग वी आर देयर. नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका क्या रिजल्ट आएगा जब हम रेगुलर फंक्शन को कॉल करेंगे? इसका क्या रिजल्ट आएगा जब हम दिस में कॉल करेंगे? सो दिस, लेट्स जस्ट सी, सिंपली देख ही लेते हैं रादर देन. ये तो हमारा ग्लोबल फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं जो हमने ऊपर ग्लोबल किया है. अब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करेंगे. ऑब्जेक्ट, ओके, बीजे नाम है, बीजे, मैं ओ बीजे ही बोल देता हूँ इसको, इट विल साउंड मोर गुड. आई होप मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया है. ओके, सो ऑब्जेक्ट डॉट आई एम कॉलिंग माई फर्स्ट फंक्शन इज रेगुलर फंक्शन एंड सेकेंड वन इज ओ बीजे डॉट एरो फंक्शन, एरो. नाउ लेट्स जस्ट सी, what do you think, what will be the output? Just answer it in your mind and let's just see. Refresh it once. What is happening there? In arrow.js 91, there, this is referring me to Smith, John, right? So arrow function तो this ले रहा है कि भाई ये वाला this है, okay? So it is taking this from its context. This still refer to the object lexical scope binding, and this refers to the global object which is window in browser. So यहाँ पर मैं एक इसके लिए आपको एक कमेंट आउट करके दे रहा हूँ मैं आपको एक स्टेटमेंट जो कि आपकी रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि यहाँ पर तो this refers to the, yes, and object dot regular में this refers to obj as we can see there. Okay, so we are doing one blunder I think there. 400 or 99, I am not getting anything. For 105 also, yes, I am not getting anything. Okay, let me just figure out something. Okay, let's just modify this function for more beginner friendly example. I have two functions here, one is get arrow and one is greet regular. This refers to the object and this refers to this. I will show you the example also, how is this happening. So what I have done there, I have defined two new functions inside the object because the function we have defined earlier was not working as we expecting. It can work, but it will get little difficult for beginners to cover up. So what we have done now, we have defined two variables which is greet now and another one is greet regular, greet arrow and greet regular. In greet arrow we have like hello this dot name. So this is not what you expect and this refers to the object and we will see something in console. Get arrow function is giving me hello and exclamatory mark and arrow, and regular function is giving me hello John regular. What is happening there? Why this is not taking the name? Because again arrow takes the context from its surrounding. सराउंडिंग में तो नेम है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ कॉन्स्ट नेम इज एरो, लेट्स जस्ट सी इनिशियलाइजर कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ओह सॉरी, या अगर मैं यहाँ पर अब एक नेम डिफाइन कर दूँ, नाउ व्हाट विल बी आंसर?
the answer will not change again, because we are saying this dot name. So it doesn't matter where are you using this. This will refer to the lexical scope, lexical environment. So this was the major difference in using this in your arrow function and this in your regular function. मैं एक last आपको comment दे रहा हूँ, that will explain you it much better and it will help you for your revision, which is in the greet arrow function, this dot name doesn't refer to the name of the property of the object. Instead, it refers to this value of surrounding context, which is likely to be global object, and it in most cases it is always the global object until and unless you are defining it explicitly, which you don't do oftenly. क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही वहाँ आता है जहाँ पर कि आपको इसकी विंडो ही चाहिए, आपको विंडो ऑब्जेक्ट ही चाहिए होती है, वहीं पर इसकी एप्लीकेशन होती है, वहीं पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. ज़्यादा दिन हम क्यों यूज़ करेंगे ना, हम सिंपली रेगुलर फंक्शन का दिस यूज़ कर लेंगे. बट हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए फॉर आर पर्सनल यूज़, एंड which is likely the global object. On the other hand, in greet regular function, greet regular was the normal function. This dot name correctly refers to the name property of John. So remember, whenever you are using arrow function inside the object, you cannot use like this dot name, this dot class, or this dot address with template literals and do something like this. You cannot do this. Always remember this. I will provide this GitHub repository plus blog in description for your revision and for better interesting. Thanks for tuning in. I know this is not the perfect tutorial, but I am trying my best. This is my initial stages of creating tutorial. But I am creating because I like teaching, and secondly, I love public and sharing. So sharing in public. So, sorry again, sharing in public. So yeah, keep loving and keep supporting. But I am sure that this tutorial will clear your major concepts about arrow function in JavaScript.